The state's demographic dividend with 56% of the working age group population, presence of premier institutes like IIM and IITs. The startups enable the state further for potential investment. And to make use of the full potential, the government brought in 3 online mechanisms or the processes like Nivesh Mitra, Nivesh Sharthi, and online investment management system for one-stop clearances and single window investment processes or reimbursement of incentives respectively. Aligning with the state's objective, the Department of Excise has also transformed its primary role of regulation to creating an investor-friendly environment, promoting various molasses, grain, and alcohol-based industries, making the state from the consumption state to production state and from importing state to exporting state. Yeah, this is what we did in the last 6 years under the leadership of Honorable CM Sri Yogi Adityanath ji. Today, we have 98 distilleries as against 61 in 2016-17. Today, we have double the number of breweries when compared to 16-17. We installed almost 21 microbreweries apart from 2 vintneries which are on the pipeline. And we promoted the new concept called premium vents in the malls so that it can be easily accessible to the consumers. Similarly, in the last 6 years, alcohol production grew almost twice, and ethanol production almost thrice, with the investment of more than 9,000 crores, with an employment of more than 60,000 people. How did we do? The department facilitated diversion of feedstock, as SSR told. Like it was initially a molasses-based industry. Now we went on multi-feedstocks from grain, cane juice, cane syrup, potato, turnip, sorghum, etc. The state facilitated by providing land bank through various agencies, adopted a ease of doing business with the time-bound approvals under single window clearance system. The investment in ethanol is further accelerated by the huge demand for ethanol production by the Government of India's ethanol blending program. And these are the major areas of investment we talk about. One is the distilleries, which are potable, which includes that liquor. Then non-potable, which includes ethanol and industrial alcohol production. Then breweries and vintneries. And as far as the ethanol is concerned, the pan-India ethanol requirement is more than 1,000 crores. But we have to provide at least one-third of the total requirement. So we have a huge supply gap, demand-supply gap. And there is a huge demand-supply gap in foreign liquor as well as the beer too, even for the institute consumption. The wine production in the state is almost nil today. But now there are 2 wineries are coming up because of our policy, which we introduced recently. Due to demand, the many foreign companies, it's a new avenue for investment. The process of application for the breweries established is the same as that of the establishment of the distillery, except for the timeline for construction. The establishment of vintnery is an emerging field in UP, since there is no vintnery currently operational in the state. However, the wine is a rapidly growing market in UP, with a consumption of approximately 5 lakh liters as on today, with an expected growth of 10% year on year. Though our vintnery yield, as SSR said, though the vintneries of UP dates back to 1961, and UP is known for #1 state for fruit production with the major fruits like mango, guava, banana, jamun, etc., that there is no wine making industry in UP. Keeping in mind, the government published a new wine policy in 2022 to increase the farm income and to promote the wine tourism. The damaged and fallen fruits, which otherwise go waste, will now provide additional income to the farmers. These are the main features of the wine policy. Basically, we give 5 years duty exemption for the winery being established in UP with the usage of the state-owned fruits produced. The retail vents and wine taverns are also allowed within the premises. The entire application is also online, and which are similar to distilleries and breweries. These are our stakeholders, main stakeholders present in UP. Most of them are international, few of them are Indian industries which are.
Thank you so much, Dr. Senthil, for your kind words. Now, please allow me to welcome our next panelist for the day, Shri Anil Kumar Sani, who's the director of Godson Organic Farm Private Limited. He's a nature lover, organic farmer, industrialist, and consultant for environmental management and QMS. Anilji has been serving the Indian industry for more than 25 years. In the larger interest of fruit growers of Uttar Pradesh, he has been instrumental in the development of fruit wine policy for UP. Please welcome him with a huge round of applause. Honorable Minister of Commerce and Industry, Government of India, Mr. Piyush Goyal, sir, Minister of State for Excise, Mr. Nitin Agarwal, sir, Additional Chief Secretary, Excise and Sugar Industry, Government of Uttar Pradesh, Mr. Sanjay R. Bhusareddy, sir, Excise Commissioner of UP, Mr. Senthil Pandian C, sir, distinguished speakers and all esteemed investors present in this session, good morning to all of you. Investors not only from India but across the globe. It's not working. Okay. I am a small farmer with very limited resources and small capital, but with the support of our government's policies, I could plan for establishing a fruit winery with wine tourism at our organic farm. This clearly signifies that every single investor, whatever the level may be, is being given support to establish an industry in Uttar Pradesh to make it a USD 1 trillion economy. And here's a humble message from our Chief Minister, sir. Progressive horticulture is being developed. Large variety of fruits and flowers are grown in different terrains of UP, most of which are suitable for making exotic wines. I would like to point out few unique benefits of establishing a wine industry in UP. Wine policy of UP is the most liberal wine policy amongst all states of India, and UP itself has big market potential for wines. With a choice of large variety of fruits available in huge quantities and available at cheaper manpower is also available, the basic infrastructure and running cost of a wine industry is comparatively low in UP as compared to other states. Moreover, UP has easy and cheaper transportation to other parts of the country. Here I would like to mention that licensing system for setting up a winery is very much easy and simple. And it is very transparent. Also, it can be applied online through a website of Excise Department of UP, and the documentation requirement is also very simple. After the online application, permission for establishment of winery is granted within maximum 30 days. And
the best part is this, ki the PDF copy of the license is provided to the applicant through WhatsApp and email as soon as it is sanctioned, and the hard copy follows later on. And entire policy of licensing and other processes is directly monitored by our ACS sir and Excise Commissioner sir to make it more transparent and make it fast. And here are a few benefits of establishing a winery in UP. And there are other departments also, like food processing industry policy, like tourism policy and MSME promotion policy. They are all giving different benefits to the wine industry. And it is not only wine, but other value-added products could also be developed for added profits. And wine industry being a zero discharge industry, that is, no pollution is there. And all the byproducts of this industry generate huge profits. And as you know very well, sir, that wine tourism is an important part of wine industry and is a lucrative revenue generating aspect of this industry, and which also helps in sale promotion of wines. And being a farmer of Uttar Pradesh, I am thankful to all of you who are investing in UP, and also I invite others to come and join hands with us to make UP a $1 trillion economy. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for your information. Now, please allow me to welcome our next panelist for the day. That's Mr. Amar Singh. He's the COO of the country's largest IMFL, Radico Khaitan Limited. Amarji, a sales and a marketing veteran, has distinguished professional career spanning over 3 decades with a diverse range of FMCG companies. He has one track record of heading the large corporations, both Indian and MNCs. Please welcome him. Honorable Cabinet Minister, Piyush Ved Prakash Goyal ji, Excise Minister Shri Nitin Agarwal ji, Additional Chief Secretary, Excise and Sugar Industry Shri Sanjay Bhusreddy ji, Excise Commissioner Dr. Senthil Pandian, all dignitaries sitting on the dais, dignitaries from the industry, investors and friends from the media. I am honored to represent the liquor industry on this platform, an industry which is 4.25 lakh crores with excise duty collection of over 2.5 lakh crores. The alcohol industry creates huge value in the form of support to agriculture, 5 million farmers, direct and indirect employment to 2.5 million people, livelihood to 10 million people, supports multiple ancillary and packaging industry, and above all creates brand value. Single malt brands from India are now a rage all over the world. Indian companies like Amrit Distilleries, John Paul and Radico Khaitan are producing the best in the world. So having said that, I think it's a true manifestation of the Prime Minister's vision of vocal for local and make in India. India has a vision to become a 5 trillion economy. By 2027, Uttar Pradesh has pledged to contribute 1 trillion. 2017 saw the dawn of a new era in UP. Yogi Adityanath ji became the chief minister
And since then, UP has transformed. Ever since 2017, Uttar Pradesh has become a land of limitless opportunities. But what is it in for the industry? Law and order, infrastructure and connectivity, power, workforce, raw material, lower political intervention. All that you require for the business and industry to grow. And today, therefore, UP is the number one choice for investment in the country. There has been all-round improvement in all major aspects that affect industry and business growth. There is a positive buzz about the state. The distillery and liquor industry of Uttar Pradesh is big, offers huge opportunity in the times to come. Liquor consumption in India is set to rise many-fold in the next 5 years. I think there's something wrong with your slides. Red goes to the reverse, which is the green. So, gentlemen, ever since 2017, when UP introduced the new progressive excise policy, there has been a sea change. The monopoly market was removed and a free trade market was introduced. This has been a game changer since then. What needs to be understood, the ease of doing business with alcohol industry is exemplary, and it's an experience by itself. Dealing with excise department of UP has been extremely pleasant and far more different than what it used to be earlier. The rules of applying for a new license has completely been simplified. Everything is online. From the time the application is made to the time the grant of license is there, it's less than 30 days, and it's personally monitored by the ACS, Excise and Sugar. So this is a very big change in UP. So investors, this is great news for all of us. With a progressive policy approach, industry volumes have grown at a compounded annual rate of 17% or more. And the government and its policy, the industry volumes have grown by 2x, 2.6x rather. We expect the industry to double in 5 years. This is a great opportunity. The excise duty collection has moved from 17,000 crores to 40,000 crores. The target is now 45,000 crores, and the industry has potential to reach 1 lakh crores in the next 5 years or lesser. To sustain this growth momentum, the industry has invested more than 10,000 crores, sir, over the last 5 years, including about 2,500 crores in setting up grain distillery capacities. The visionary leadership of CM Yogi Adityanath ji and the Excise Department of UP has achieved mission impossible. Uttar Pradesh has become the highest revenue generator in the country at 41,000 crores and still growing. But at the same time, the UP ethanol opportunity is very big. From a requirement of 327 crore liters in 21-22,
the requirement would go to over 1,000 crore liters by 25-26 for 20% blending. Approximately 1,000 crore liters of additional grain capacity would be required by 2025 to meet the 20% blending norm and the growing demand from the portable industry. This is a great opportunity, and not only great, but the best opportunity to invest in UP. The proof of the pudding is in its eating. Industry positive policies and business environment have helped Radico Khaitan, the leading alcohol company of UP, to achieve invincible targets. Radico is now a formidable player. We are India's #1 alcohol brand company with global footprints in 100 countries. The largest plant in the country, Rampur Distillery, is based out of UP. We are setting up another big plant in Sitapur with a 400 KL grain distillery. Together, this will make us the largest in Asia. So, gentlemen, this is all because investor confidence in the state of Uttar Pradesh, our Honorable CM Yogi Adityanath, and the great job being done by the UP Excise Department. It's a sea change. Radico Khaitan, as you all know, has world-ranking brands. Rampur Indian Single Malt, Jaisalmer Indian Craft Gin are making waves the world over. And the point to be noted is that they all come from the state of Uttar Pradesh. Rampur is investing, as we speak, 250 crores in the grain, in the dual mode, converting molasses into grain. We are investing 600 crores in Sitapur. The production would start by the end of this month. With an annual bottling capacity of 20 million cases, the bottling hall is going to be the largest in Asia. So, gentlemen, Radico is proud to be a part of UP, homegrown state, and we are proud to be India's largest liquor brand company with origin in Uttar Pradesh. We are proud Indians. So, gentlemen, with all this experience as an investor, I welcome all investors to come in to the state of UP, the land of limitless opportunities. So, thank you very much for giving me time on this forum. Thank you so much, Sri Amarji. Next, we're going to call on our panelist is Mr. Vineet Chopra. He's the MD of Valor Brewing Private Limited. Mr. Vineet Chopra is a man that wears many hats. He's the founder of 5 companies, each of them in different industries. These include Nanda Construction Company, Weaves Exports, RN International School, Weaves, and 5th, the most important one, the Valor Brewing Private Limited, started in 2020 with a vision to revolutionize drinking culture in the country. Mr. Chopra has set up his own commercial craft brewery with the support from Excise Department of UP. He has also launched his beer brand, Campai, in December 2022. Please welcome him with a huge round of applause, ladies and gentlemen. And before I call him on stage, I would request all the photographers kindly, humbly to please click pictures from the sides and not come in between, because this event is going on live. So I would request everybody to please capture the pictures from the sides. Thank you so much. Honorable Minister of Industry and Commerce, Shri Piyush Goyal ji. Honorable Minister of Excise, Shri Nitin Agarwal ji. Our Additional Chief Secretary Excise, Dr. Sanjay Bulsadi ji. And Dr. Senthil Pandian, of course, our guide and Excise Commissioner of UP, sir. A very good morning to all the delegates here, to investors here. I heard the speech of Mr. Ramar Sinha. I heard the speech of the person speaking there before that on the wine, gentleman there. I'm a very new entrant in this trade, and I'm very sorry for that. I was allotted 5 minutes to speak, but maybe I take 2 minutes more
because what comes today is coming from my heart. My son, a very young entrepreneur, he qualified, mastered from US. He came back from the US hunting opportunities. And one fine morning we sat and we thought what to do now. Suddenly it all diversified to the brewery. And let me tell you investors here, it should be a goosebump experience for you when you get a call from an officer of the excise departments saying, "Good morning, Mr. Vedant. Welcome to the alcohol factory, a club." And that was Dr. Joginder Singh. He called up, and that's how the journey started. And we moved ahead. The scare, of course, as a father, as ma'am told me, we are into schools, we are into constructions, we are into exports, a new line, a new vision, nobody to support, hunting here and there, and finally reached to a moment which should be honorable to the whole state and respected industry minister, sir, Mr. Piyush Goyal, that's for your knowledge, sir, that India becomes the first craft brewing Japanese beer being brewed in India. And let me tell you this today, that we have already brewed 3,000 liters of craft brewery in UP, and UP is the state which was called to be the largest state, the most populated state, but today, yes, it is the fastest moving state. It is, with all the guidance of our Honorable Chief Minister, the Prime Minister, I'll be very honored to say that yes, UP has been termed as the MSME capital of India, which itself speaks a lot about Uttar Pradesh. As far as I've been called to speak on beer, and I'm honored to do that. The industry of beer is a very upgoing industry now. I'll be very frank, the youth in India now today is no longer restricted to just a variety. You can see the data there, the growth of the beer in India. In India in 2014, we consumed 3,750 million liters of beer. In 2023, we project 4,296 million liters, and in 2027, it goes to 5152 million liters, which is an immense growth. And if I talk to UP, sir had already told, the production of beer in UP was 22.90 crore liters against a consumption of 27.36 million liters. Sorry, crore liters. The gap there is like 4.50 crore liters. If you talk on the projected consumption for 23, it is 37.32 crore liters, and a gap which is really amazing, really surprising, is 12 crore liters. So that's the strength of this industry called the beer. The brewery is very strong today. Now, as I told the Indian youth, I'll be very honestly telling you, I'll take the example, the Indian youth is now no longer restricted to a very few variety. They all want to change now. I'll take the example as automobile. When India started in the automobile industry, we were restricted to Ambassador. That was the only car we had. Then we shifted to Fiat. Then we shifted to Maruti. And now you name a car and it's there. It's like the whole segment of automobile is in India today. Now when I talk and compare that to beer, initially beer when I was young, for me, beer was jaw ka pani. But today, yes, the craft beer industry has become so strong that there are variants called the lager, the stout, the pale ale. And people have diversifying to these new tastes of beer. And it's no longer a drink. I'll be honest, it's a lifestyle. It's changing. The people of today's generation are moving ahead towards having that lifestyle. And yes, with the support of our Prime Minister and the Chief Minister, the country is growing. And we always know we have the most youth population in India today. When I did this MOU with the Japanese company, which is the second biggest, largest craft brewing company in Japan after Suntory, yes, they have 17 variants of beer, which is amazing. They have 17 beer variants. When they visited Varanasi, visited India,
They saw the population, and that was one of the reasons which brought them to India. Now, when I talk on the ease of business, which every investor looks upon, data is of course one thing. We are the Volvo Brewing Company Private Limited. I know it's just a company which has just launched in 2022 with the most modern infrastructure. And that was the reason why we could tie up with the Japanese people who are so constrained about quality, about the compliances, but we could fulfill all of that. And we could finally do it. And the most pride moment for the whole state today is that they've already brewed 3,000-liter test batch, which is going to be in the market next month. Now, we are already launched our beer in the form of kegs. And as Sir said, Mr. Busreddy said before, Sanjay Sir said, that they are giving a lot of options for microbreweries, pubs, resto bars. Now, that is the place where these kegs are required. So, we first launch in kegs and are going to come in bottles very shortly. Now, every investor sitting there will always like to have that feel of ease to do business. So, as far as the ease is concerned, with all due respect to your team sitting here, I will only say one thing. When my son entered this trade, I saw a fatherly figure in form of Dr. Senthil Pandian. I met him so many times in Lucknow. And every time I got one word to my son, motivated him more than me, pushed him more than me. And I still remember his golden words, Jaldi karo, jaldi karo. And finally, yes, we could do it. So thank you so much for that, sir. And thank you to the whole team of UP Excise for doing this for us. And I'm really honored to say that the team really worked very strong for us. Thank you so much. Thank you so much, Shri Vinod Chopra ji. Now we're going to have a look at the message from our Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji and film on the excise sector. Let's see what he has to say in this video. Under the leadership of Honorable CM Yogi Adityanath, Uttar Pradesh is making progress in every sector. Excise Department Uttar Pradesh has shown tremendous rise in excise revenue since 2017-18, achieved because of the exploration and permission of dual feed and multi-feed distilleries for ethanol and alcohol production. The state encouraged the investments for establishment of new distilleries and breweries, resulting in employment generation. My vision for India is rapid transformation, not gradual evolution. The traditional role of Excise Department has taken a paradigm shift from regulating the manufacturer, possession, distribution and sale of liquor to transforming Uttar Pradesh from consumption state to production state, as well as from importing state to exporting state, by adopting online, transparent and fair business processes and ease of regulations. The testimony of this transformation is clearly visible through the establishment of distilleries, breweries, microbreweries, premium vends and other alcohol-based industries. Thus, industries have shown prominent growth in Uttar Pradesh in last 6 years. माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का अनुसरण करते हुए आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है. The entire application process is done online through Nivesh Mitra portal. The excise policy of Uttar Pradesh has given tremendous boost to ethanol blending program of Government of India. 64 out of 85 distilleries are now producing ethanol. UP is #1 in alcohol and ethanol production and has produced more than 131 crore litres of ethanol in the year 2021-22 and is supplying 34% of the total ethanol demand pan-India. Another upcoming area for investment is winemaking, as it has seen a tremendous growth. Under its wine policy, UP has announced an exemption from duty for in UP.
This has created a niche for fruit wine, encouraging fruit growers of UP to get better prices for their product. It would also create a market for damaged and fallen fruits, which will further boost horticulture and increase income of farmers. The government of UP invites you to utilize this conducive environment for investment in the state and become an integral part in development of Uttar Pradesh, the prime growth engine of New India. Uttar Pradesh, New India's growth engine. I would like to thank our Honorable Chief Minister, who's been doing a great job. And yes, indeed, New India's growth engine that has UP become. And it's all because of everybody's hard work, our vision, because of our Honorable Chief Minister and our Prime Minister. Now, I would request our guest of honor, that Shri Nitin Agarwal, Minister of Excise and Prohibition, to please join us. 6 वर्ष से चल रही सरकार में से ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी अगर किसी प्रदेश की है तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की है। आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो प्रदेश सरकार को बड़ा राजस्व देता है, अपनी अहम भूमिका निभाता है। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के बजट का, अगर मैं थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, पिछले 6 वर्षों में हमारे राजस्व में 2.5 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जो 2016-17 में डिपार्टमेंट का राजस्व 14,273 करोड़ रुपए होता था, वो आज हमारा राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा, उसमें राजस्व 36,331 करोड़ हुआ। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में हमारा लक्ष्य इस राजस्व को बढ़ाकर 42,000 करोड़ करने का है और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें हमने 45,000 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य हमने बनाया है कि हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसे करने का काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि खास तौर से विभाग में एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को हमने बहुत मजबूत किया है और लगातार पूरे वर्ष हमारी एनफोर्समेंट की टीम्स उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, और जहां लगता है कि कोई गलत गतिविधियों का अगर कहीं पे कुछ हमें सूचना मिलती है तो लगातार हमारी एनफोर्समेंट की प्रक्रिया वहां चलती है। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी विभाग में एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने, सुदृढ़ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें आवश्यकता थी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें उपलब्ध कराने का काम किया है। औद्योगिक विकास जो हमारा लक्ष्य भी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया, जिससे जो हमारे प्रदेश में जो निवेशक हैं या जिन्होंने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाई है उनको उससे सहूलियत मिल सके। इसके साथ ही साथ ग्रीन फ्यूल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फ्यूल की तरफ जाएं। हमने ग्रेन बेस्ड के साथ साथ मोलासेस बेस्ड और उसके साथ साथ बी हैवी और सीधे केन जूस सिरप से हमने इथेनॉल बनाने की भी हमने प्रक्रिया शुरू करी और उसको लाइसेंस देने का हमने काम किया है। वाइन की नीति भी हम लोग लेकर आए हैं। पहली बार प्रदेश में वाइन की नीति लेकर आए जिसमें हमने लोकल फार्मर्स को भी उसमें सपोर्ट करने का काम किया, उसे जोड़ने का काम किया। और पहली बार प्रदेश में लोकल फ्रूट के साथ, उसमें उत्तर प्रदेश में जो लोकल फ्रूट जो जहाँ प्रोडक्शन होता है उस फ्रूट के साथ वाइन बनाने के प्लांट्स को लगाने के लिए हमने प्रोत्साहित किया इन्वेस्टर्स को कि जो इन्वेस्टर्स हमारे लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे उनको विभाग तमाम तरीके की सहूलियत देने का काम करेगा। मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक अभूतपूर्व परिवर्तन और साथ ही साथ हमारे प्रदेश में जो डिस्टिलरीज और वाइन ब्रूअरीज सेटअप हुई हैं उसकी संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। जो 2016-17 में हमारे प्रदेश में 61 डिस्टिलरीज हुआ करती थी, वो आज अगर मैं बात करूं तो वो बढ़कर 85 हमारी स्थापित हो चुकी हैं और 13 डिस्टिलरीज प्रक्रियाशील है जिसका काम
चल रहा है, जो सेटअप हो रही हैं हमारे प्रदेश में। तो टोटल अगर मैं उसको करूं तो 98 डिस्टिलरीज हमारे प्रदेश में स्थापित हो रही हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्दी इस फिगर को 100 क्रॉस करके लेके जाएं। 2 और डिस्टिलरीज जाएंगी तो 100 डिस्टिलरीज, पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां पे 100 डिस्टिलरीज होंगी। साथ ही साथ ब्रेवरी, जो पहले 5 की संख्या थी, वो आज बढ़ के 6 हो गई, और 4 ब्रेवरीज हमारी ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिनका जो यहाँ पे सेटअप हो रही हैं, जो प्रोसेस में है। साथ ही साथ माइक्रो ब्रेवरी जो पहले 0 थी, उसको वो बढ़ के 19 माइक्रो ब्रेवरीज हमारे प्रदेश में सेटअप हुई, और 2 माइक्रो ब्रेवरीज का काम अभी चल रहा है। प्रीमियम वेंड्स शॉप्स, जो रिटेल वेंड्स हैं, जो पहले 52 था, वो अब बढ़ के 365 हो गया, 365 से बढ़ के 685 हो गया। 99.9% होती है। ये जो लेबॉर्ट्रीज में काम होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी लैब्स हैं, चाहे वो केमिस्ट्री लैब्स हो, चाहे वो फिजिक्स की लैब्स हो, तमाम ऐसी जगह इस 55,000 बॉटल्स, ये प्रति माह करीब 55,000 बॉटल्स का हम लोग इसको इंपोर्ट करते थे। इसकी कोई नीति हमारे प्रदेश में नहीं थी, ना इसका कोई कभी प्रोडक्शन हुआ था हमारे प्रदेश में। लेकिन अब की बार, पहली बार हमने रूल्स में परिवर्तन किया, अपने एक्साइज रूल्स में। पहली बार हम इस नीति को लेकर आए कि हम HPLC का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में करें, और हमने इस रूल को यहाँ पे हमने रूल को लेकर आए, और पहली बार 18 लाख लीटर वार्षिक क्षमता का जनपद मेरठ, ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है, इसका प्रोडक्शन हमारे प्रदेश में हो सके, जिससे हमें जो हमारी ह्यूमन पावर, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, जहां मार्केट की अपार संभावनाएं हैं। मैं आज यहाँ पे आए हुए हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनवाइट करता हूँ कि आप प्रदेश में इन्वेस्ट करके आप यहाँ पे अपने उद्योगों को लेकर आएँ। और इसी के साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले करीब 6 वर्षों में, 2017 से 18 से लेकर के मैं आज तक की बात करूं, तो एक्साइज डिपार्टमेंट में करीब 7,800 करोड़ रुपए का निवेश पिछले 6 वर्षों में हुआ है, जिसमें प्रदेश के 65,000 नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारे डिपार्टमेंट ने करने का काम किया है। मैं प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि की हैसियत से आप लोगों से इतना ही कहूँगा यहाँ पे कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, अपने उद्योगों को लगाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है। सरकार आपके साथ आपको जो जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता होगी, जिस तरीके की भी आपको आवश्यकता होगी, सरकार आपकी मदद करेगी। और मैं यहाँ पे उपस्थित आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी का भी एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को आज मिलेगा, कि वो आज यहाँ पे आकर उन्होंने इस समिट को, इस सेशन को एड्रेस करने में अपनी अनुमति देने का किया उन्होंने। इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। और यहाँ पे आए हुए तमाम हमारे इन्वेस्टर्स को शुभकामनाएं, और एक बार फिर से उनसे यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आकर आप इन्वेस्ट कर जितनी भी, जो भी सरकार आपकी मदद कर सकती है, मदद देने का काम करेगी। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच श्री नितिन अग्रवाल जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी आवर चीफ गेस्ट फॉर द डे, श्री पीयूष गोयल जी को, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन। Thank you very much, madam. Indeed, very delighted to be among such a distinguished panel led by my dear friend Shri Nitin Agarwal ji, the Honorable Minister for Excise and Prohibition. Incidentally, we also have two very senior ministers with us in this August gathering, Shri Jitin Prasad and Shri Kapil Dev.
Thank you very much, Shri Bhus Reddy ji, for the wonderful presentation, for all the outstanding work you have done for the sugar industry and to promote the huge potential that the state of Uttar Pradesh has in developing ethanol, distilleries, the alcohol-based ecosystem. Thank you, Senthil, for all your work to promote the industry and for the positivity with which Uttar Pradesh presents itself to the world today. We were very delighted to hear Mr. Amar Sinha from Radico Khaitan and Shri Vineet Chopra from Wallop Brewing. But I think, Sani ji, you took my heart. It was really wonderful to hear you, a farmer coming and presenting his credentials proudly and with the confidence of the future that you have shown us. I think India is in safe hands, Uttar Pradesh is in safe hands. बहुत ही आनंद आया आज की अभी तक की प्रोसीडिंग्स देख के, थोड़ा बहुत भूस रेड्डी जी के साथ चर्चा करके उत्तर प्रदेश में जो जो बदलाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक विकास की लहर तेज गति से आगे बढ़ रही है, इसका जो अनुभव करने का मौका मिलता है आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आकर, वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश चल चुका है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत विकास और उत्तर प्रदेश के बीच में अब बाधा नहीं बन सकती। So there's only one way now, and that's up for UP. And to my mind, this story started way back in 2017. I'm sharing a little insight with all of you. मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को भी थोड़ा इसकी जानकारी मिले तो अच्छा रहेगा। 2017 में जब चुनाव चल रहा था उत्तर प्रदेश की असेंबली का, तब हमें भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बनाने का काम और जिम्मेदारी दी गई थी और एक पूरी टीम प्रदेश भर में घूमी, लोगों का फीडबैक लिया, क्या उनकी आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, किन चीजों से वंचित हैं, और ध्यान में आया कि बहुत सारे काम करना आवश्यक है। लोग त्रस्त थे, लोगों को बदलाव चाहिए था, लोगों को एक अच्छा प्रशासन चाहिए था, एक अच्छा जिंदगी में नए मौके चाहिए थे, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, महिलाएं दुखी थी कानून व्यवस्था से, अलग अलग प्रकार से हमें साफ जाहिर हो रहा था कि बहुत कुछ करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश को सही मार्ग पे लाने के लिए। तो स्वाभाविक है, जब हमने मैनिफेस्टो की कल्पना की, मैनिफेस्टो में लिखा क्या क्या काम करना आवश्यक दिखता है, तो उसका जो बजट बनता था, उन सब कार्यों को करने का जो बजट बनता था, वो बहुत बड़ा बजट सामने आ रहा था। बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे कि इसको हम कैसे अचीव करेंगे। अगर इतने सारे काम करने हैं तो ये काम कैसे किया जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए रिसोर्सेज का अभाव में हम ये अगर प्रॉमिस भी करें यूपी की जनता को तो शायद अपने विश्वास घाट हो जाएगा, हम प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय में बहुत ही सख्त है। अगर हमने मैनिफेस्टो में कुछ लिखना है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ आश्वासन देना है, कुछ लोगों की उम्मीद खड़ी करनी है,
तो हमें उस पर खरा उतरना अति आवश्यक है. He does not allow us to write a single line in the manifesto where he is not personally convinced that this will be implemented, it is implementable, and we will have the necessary wherewithal, the resources and the capability to do it. Of course, there are many things where we have the courage of conviction that what is good for the nation, what is good for the state, and many times these are political and non-finance related issues. That also finds mention in the manifesto. जैसे कि हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और अब राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है. तो ऐसी कई आस्था से जुड़ी हुई चीजें भी मैनिफेस्टो में होती हैं. लेकिन जहां भी आर्थिक व्यवस्थाओं की बात होती है वो बहुत सख्ती से देखते हैं कि इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे. तो मुझे आज भी वो दिन याद है और लखनऊ में हम सब बैठे थे जब फाइनल रूपरेखा बनी मैनिफेस्टो की और सवाल उठा कि रिसोर्सेज तो हमारे पास इतने होंगे नहीं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने रेफर किया तो माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी ने एक विश्वास दिखाया कि उत्तर प्रदेश में हमें सिर्फ 3 काम करने हैं. अगर हम ये 3 काम पे खरे उतरे तो रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं होगी, निवेश की भी कोई कमी नहीं होगी और आगे उत्तर प्रदेश का भविष्य दशकों तक उज्जवल रहेगा. और वो 3 बातें जो उन्होंने रखी थी उस दिन, इट रेसोनेट्स इन माय माइंड इवन टुडे. मुझे आज भी वो दृश्य याद है जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ भू माफिया को खत्म करना है, सैंड माफिया को खत्म करना है और लिकर माफिया को खत्म करना है. अगर हमने ये 3 माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया और लिकर माफिया के ऊपर प्रहार किया और इसमें ईमानदार व्यवस्था ले आए तो उत्तर प्रदेश में ना कभी रिसोर्सेज की, पैसे की कमी पड़ेगी, ना निवेश की कमी पड़ेगी और उत्तर प्रदेश के लोगों में इतना सामर्थ्य है कि वो इस प्रदेश को कहां से कहां लेके चले जाएंगे. प्रधानमंत्री जी ने इस विश्वास के ऊपर वो मैनिफेस्टो में हमें अप्रूव किया. हमने जो जो प्रॉमिसेस करने थे, जो जो आश्वासन देने थे, और आज जब मैं भूस रेड्डी जी की बातचीत से, नितिन जी की बातचीत से सुन रहा था कि कहां एक्साइज का कलेक्शन 14,500 करोड़ होता था और अब बढ़ के वो 42,000 करोड़, 3 गुना आज उत्तर प्रदेश में एक्साइज का कलेक्शन मात्र 6 वर्ष की अवधि में, जिसमें 2 वर्ष कोविड के वजह से एक प्रकार से हम सभी ने देखा कि अर्थव्यवस्थाएं पीछे चली गई. ये दर्शाता है कि एक ईमानदार सरकार, एक जनहित और देशहित को प्राथमिकता देने वाली सरकार, एक सरकार जो किसी प्रकार का गलत काम स्वीकार नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी, आने से कैसे प्रदेश में नए उत्साह के साथ व्यवस्थाएं बनती है, व्यवस्थाएं सुधरती हैं, रेवेन्यू बढ़ता है और वो बजट आने के कारण कैसे फिर प्रदेश में आगे चल के तेज गति से हम विकास और प्रगति की मार्ग पे चल सकते हैं. इसकी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे सभी कलीग मिनिस्टर्स को, हमारे अधिकारियों को, हमारे निवेशकों को और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को कि आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के एमओयूज हुए हैं, लाखों करोड़ की कमिटमेंट्स हुई हैं कि प्रदेश में आके लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आज लोगों को विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करना, उद्योग लगाना सरल भी है,
उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं ईमानदार भी है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उद्योग को प्रोत्साहन देती है, उनको अट्रैक्ट करती है, उन्हें कोई डर नहीं है यहाँ पे काम करने का। और आगे चल के एक प्रकार से निवेशक उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर भी विश्वास रख रहे हैं। और जरा गहराई से समझ लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफी मेरे भाई बहन और युवा युवती भी मेरे सामने दिख रहे हैं। निवेशक विश्व भर से जब यूपी में आके आज निवेश कर रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की विवेक पे भी विश्वास कर रहे हैं कि वो आगे चल के भी ऐसी ईमानदार और अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में वर्षों वर्षों तक रखेगी। और केंद्र में एक ऐसी अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार, ऐसी निर्णायक नेतृत्व वाली सरकार जो मिल के डबल इंजन दोनों सरकारें उत्तर प्रदेश को तेज गति से विकास के मार्ग पे दशकों तक आगे बढ़ाते रहेगी। मैं कुछ आपके सामने और जानकारियां ऐसी रखूंगा जो निवेशकों के लिए खास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव है। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हम देश भर में करते हैं, किन प्रदेश में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं जिससे उद्योग लगाना, व्यापार करना, उद्योग चलाना सरल हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये विश्व भर की रैंकिंग्स होती है जिसमें भारत ने भी बहुत उछाल लगाई है, बहुत कदम आगे बढ़े हैं हम। कहाँ एक जमाने में हमारा 140 के ऊपर रैंक होता था विश्व में, अब 60s में रैंक आ गया है। ये अलग बात है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी एक देश ने कुछ गड़बड़ घोटाला करने के कारण वर्ल्ड बैंक ने तो वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को बंद कर दिया है, लेकिन हमने अपने स्टेट्स के बीच में, प्रदेशों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चालू रखी है। और आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिलीव करते हैं कि कॉम्पिटिटिव और कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म जो संघीय ढांचा है, इसमें आपस में स्पर्धा भी होनी चाहिए और मित्रता भी होनी चाहिए। हमने कोलैबोरेट भी करना है आपस में, लेकिन स्पर्धा भी ऐसी हो, एक अच्छी स्पर्धा जिसका लाभ प्रदेश को मिले, प्रदेश में निवेशकों को मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कहां पीछे था आज से 6 साल पहले जब हमने शुरू की, और आज देश में दूसरे नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मेरे समक्ष एक और रैंकिंग है जो मेरे विभाग करता है, स्टार्टअप इंडिया, जो मूवमेंट 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। स्टार्टअप इंडिया की भी जो तेज गति से प्रगति हुई है उत्तर प्रदेश में, वो भी देखते हुए बहुत आनंद आता है। 2018 में एक एस्पायरिंग लीडर के रूप में उत्तर प्रदेश दिखता था, एक एस्पायरिंग लीडर। आशाएं हैं आगे चल के हम और आगे सुधार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 2017 में तो योगी जी की सरकार आई थी, तो शुरुआत का दौर था, एस्पायरिंग स्टेटस था उत्तर प्रदेश का। 2020 तक इमर्जिंग इकोसिस्टम में अव्वल दर्जे में थे, यानी 2 वर्ष में, जिसमें काफी समय कोविड का भी रहा, 2020 का पूरा वर्ष, उसमें उत्तर प्रदेश एक इमर्जिंग इकोसिस्टम के रूप में उभरा। और आपको जान के खुशी होगी कि 2021 जो लास्ट रैंकिंग आई है, अब 2022 की रैंकिंग डिटेल्स आएंगी। 2021 में उत्तर प्रदेश लीडर बन गया स्टार्टअप की रैंकिंग में, उसने नेतृत्व लिया स्टार्टअप के इकोसिस्टम का। और उसी के फलस्वरूप पिछले 6 वर्षों में, और आप जानते हैं कि 6 वर्ष पहले तो चंद 400-500 स्टार्टअप्स थे भारत में, आज 90,000 के करीब स्टार्टअप है। और उसमें
उत्तर प्रदेश में 8,277 8,277 स्टार्टअप्स। कौन सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनेगा। आज चौथे नंबर पे है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में उत्तर प्रदेश में। और मेरा तो मौका मिला मुझे बनारस में अन्य जगहों में युवा युवतियों के साथ इंटरेक्ट करने का। जो स्टार्टअप्स चलाते हैं, जो उत्साह है, जो नए नए टाइप के आइडियाज लेके आ रहे हैं। पिछली बार बनारस में तो एक युवा स्टार्टअप ने शायद कुछ एक ऑल्टरनेट टू लिथियम भी, क्योंकि लिथियम की किल्लत है, भारत में है नहीं, हमें फिर उसके लिए विदेशों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अभी अभी हाल में 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जरूर आई है कि शायद जम्मू में कुछ लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, पर अभी उसको और वैलिडेट करेंगे। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर लिथियम का ऑल्टरनेटिव एक बनारस का हमारा स्टार्टअप इंजीनियर निकाल लेते हैं, तो इससे ज्यादा देश और दुनिया के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े जरूर बताते हैं कि किस प्रकार से जो आज का विषय है, चाहे वो वाइन्स हो, बियर हो, अल्कोहल बेस्ड इंडस्ट्री हो जिससे एक्साइज और बढ़े, और दूसरी तरफ शुगर की इंडस्ट्री हो, इन दोनों में उत्तर प्रदेश ने कैसे अहम भूमिका निभाई है। मुझे लगता है कि जो मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने के सिलसिले में लगा हुआ हूं, और आप जानते हैं 2 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गत वर्ष लागू गए, एक दुबई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और एक ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस वर्ष भी उम्मीद है कि 2 या 3 FTAs फाइनलाइज होंगे, जिसमें बहुत सारे अवसर उत्तर प्रदेश की ब्रूअरीज और वाइनरीज के लिए खुल जाएंगे। मार्केट एक्सेस मिलेगा, हम निवेश भी कर सकेंगे, हम टेक्नोलॉजी ला सकेंगे दूसरे देशों से भारत में। मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई, साधारणतः हम सोचते थे वाइन को खोलना नहीं चाहिए, वाइन इंडस्ट्री को खोलना नहीं चाहिए कि विदेश से वाइन आ जाएगी, हमारे देश में फिर क्या होगा। आपको हैरानगी होगी जब मैंने आंकड़े देखे तो इतने वर्षों में मात्र, और साधारणतः मेरे मूल प्रदेश महाराष्ट्र में है वाइनरीज, मात्र 500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है अभी तक वाइन इंडस्ट्री में, मात्र 500 करोड़। और 6000 अंगूर के किसान थे जो वाइन बेचते थे। उसके वजह से हम और कोई वाइन इंडस्ट्री को प्रमोट ही नहीं कर पा रहे थे। और आज जो मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा कि लगभग 28 अलग अलग प्रकार के फल हैं, 28 फ्रूट्स, जिसमें से अलग अलग टेस्ट की वाइन्स बन सकती हैं, और 4 फ्लावर्स, तो 32 नॉन ग्रेप, इसमें अंगूर नहीं है, अंगूर उत्तर प्रदेश में बनता ही नहीं है। 32 अलग अलग रॉ मटेरियल सोर्सेज आपने आइडेंटिफाई किए हैं जिससे वाइन बन सके, दुनिया भर में जा सके। आपने बताया कि बियर भी यहाँ पे बड़े रूप में आ रही है, आप जापान से टेक्नोलॉजी ला रहे हो, और ऑस्ट्रेलिया के लोग तो बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं कि हम भारत से बना के वहां भेजें। पीछे यूके की मिनिस्टर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इंडियन अल्कोहल पीना है, तो हम तो नॉर्मली सर्व नहीं करते, तो मैंने कहा भाई आई एम सॉरी, मैं आज आपको नहीं ऑफर कर सकता हूं। बाद में मैंने एम्बेसी के थ्रू उनको क्रिसमस पे यूके में एक इंडियन जिन भेजी, एंड शी वाज सो थ्रिल्ड when she received that and when she had that. She was absolutely thrilled that this was delicious gin. तो भारत में capabilities की हमें कोई कमी नहीं है. We need some technology to come in, possibly not. Radico Khaitan makes me feel we don't even need the technology. But we should welcome new technology. We should welcome newer markets. और मैंने आज भूस रेड्डी जी को कहा है कि मैं अभी योगी जी को कहने वाला हूं
कि हमने यूपी से डेलीगेशंस भेजनी चाहिए जो टेक्नोलॉजी भी लाए और मार्केट भी ढूंढे कि हमारे जो यहाँ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हम विश्व की मार्केट्स में और बड़े रूप में एक्सपोर्ट कर सकें। जो आपने इकोसिस्टम मुझे बताया, कैसे आपने ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दिया, खास तौर पे ये इंडस्ट्री बड़ी बदनाम रहती थी। इस इंडस्ट्री के बारे में तो हम सब जानते हैं, एक ज़माना था कि शायद आधे से ज़्यादा लिकर बिना प्रॉपर एक्साइज पे करे निकलता था, और स्वाभाविक रूप से अगर आपका एक्साइज कलेक्शन 3 गुना हुआ है और वो भी जब आपने एक्साइज के रेट्स भी कम किए, मुझे पता चला बियर के ऊपर 260 से 200% किया, सस्ता किया, और उसकी तो मैं आपको दाद देता हूं क्योंकि दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो बिलीव करते हैं। और वो लैफर कर्व के बारे में आप में से किसी ने सुना हो तो वो तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जितना आप टैक्स रेट कम करोगे उतनी कलेक्शन बढ़ेगी। पर फिर भी यूपी में कोई 3 गुना अल्कोहल कंजम्पशन नहीं हुई है। ये जो आपने लिकर माफिया पे प्रहार किया, ये जो आपने चोरी रोकी, आपने पूरा जियो फेंसिंग करी सब प्लांट्स की, आपने डिजी लॉकर लगाया जिसके तहत आप कंट्रोल कर पाए कि कोई मैनिपुलेशन ना हो क्वांटिटीज में, आपने जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरास लगाए पूरे प्लांट्स के प्रांगण में, मैं समझता हूँ ये वास्तव में पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और मैं चाहूँगा कि इसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन, मेक अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन अबाउट दिस। I will have all the excise commissioners from all over the country, from the states, कि अधिकांश उनका DPIIT हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से संबंध पड़ेगा इस विषय में। We will call all of them. I will talk to the chief ministers or state food ministers and civil supplies ministers. Let's try to promote these technologies that you have used. At least हमारे जो राज्य सरकारें हैं उसमें जहाँ हम ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ हम जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। शायद आपके मूल प्रदेश में हम कितना सक्सेसफुल होंगे उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। नो ऑफेंस मेंट, बट ऑन अ लाइटर नोट। पर मैं समझता हूं कि कई प्रदेशों में संभावनाएं हैं, इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके चोरी रोकी जा सकती है। इसी प्रकार से मुझे लगता है जो आपने स्पीड ऑफ अप्रूवल्स किया है, जो 30 दिन में मुझे बताया गया कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, आपका पूरा प्रोसेस 30 डेज में हो जाता है। मैंने आज भूस रेड्डी जी को इनवाइट किया है, नितिन जी को इनवाइट किया है कि हमारी जो नेशनल सिंगल विंडो है उसमें भी आप अपनी पूरी लोकल अप्रूवल्स प्रोसेस को सम्मिलित करिए, जिससे हम आगे चल के पूरे विश्व को ये बता सके कि आपका अप्रूवल प्रोसेस कितना सरल है, कितना इन्वेस्टर फ्रेंडली है, कितना आसानी से यहाँ पे व्यापार बढ़ सकता है। आखिर में मैं एक और डेटा पॉइंट आपको देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक्सपोर्ट्स, निर्यात। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया कि सभी प्रदेशों ने भी निर्यात को एक जिम्मेदारी माननी चाहिए, और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक मंत्री नियुक्त किया एक्सपोर्ट को विशेष ध्यान देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट्स में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्लान को तेज गति 20 गुना वृद्धि हुई है निर्यात में। दूसरे सीरियल्स में 7.5 गुना वृद्धि हुई है निर्यात में। आयरन एंड स्टील जो उद्योग से जुड़ा है वो लगभग 5 गुना निर्यात हो। तो संभावना इतनी ज्यादा है, प्रतिबद्ध है, 24 घंटे संकल्पित है, और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य बहुत उज्जवल है। उत्तर प्रदेश में उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है। दिस इज ट्रूली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिस इज ट्रूली अ मैग्निफिसेंट स्टेट, अ स्टेट विच हैज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम रिफॉर्म, परिवर्तन कोई दबाव में नहीं कर रहे। हमारा परिवर्तन किसी दबाव में नहीं है। हमारा परिवर्तन का काम हमारी संकल्प है,
हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा एक कन्विक्शन है कि जितना बदलाव लाएंगे, जितना रिफॉर्म करेंगे, जितनी अच्छी चीजें देश और प्रदेश में आएंगी, उससे उत्तर प्रदेश और पूरा देश लाभान्वित होगा, देश का एक एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। इस अमृत काल में प्रवेश करने का वर्ष में जो उत्तर प्रदेश ने ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है, मैं समझता हूं बड़े सही समय पे किया है। ये आगे आने वाले 25 वर्ष में भारत को एक विकसित, एक समृद्ध देश बनाने की नींव रखने का काम, बड़े रूप में निवेश और उद्योग को उत्तर प्रदेश में अट्रैक्ट करने का काम करेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। So thank you so much for such kind words, wisdom words. Before we end this session, I would like to have the vote of thanks. I am honored to be among such honorary dignitaries, our guest of honor, Shri Agarwal ji, our chief guest, Shri Piyush Goyal ji, Dr. Senthil ji, and all the panelists and our esteemed investors. Thank you so much for your valuable time and such pleasurable experience with us. This is me, Arushi Verma, on behalf of UP Global Investors Summit, thanking all of you for your time and your energy. I would now